Mathematics, you read about different parts of the subject. You read about algebra, right? You read about geometry. What is the name? It depicts what kind of numbers you are going to read. Okay, name only tells you what you are going to study now in mathematics. Now, mensuration topic is from this topic, from geometry. Now you are going in big class, you are going in 7th class. Okay, you must know that mensuration topic we are studying from geometry part, in which we talk about angle, in which we read about lines, distance, space. Okay, space could we call it region also. Suppose I have a circle, right? If we talk about inside the circle, some space inside the circle, I will be talking about region. I will be talking about region of the circle or space occupied by the circle. Okay, just understand, abhi kuch nahi likhna. I will be telling you when to write. Just understand the things, understand the names, okay? And we'll be using it in questions. Then I'll be telling you how to write. Whenever we talk about the inside part of this circle, we call it region of the circle or space occupied by the circle. And whenever we talk about this boundary of the circle, around the circle, around, here was a point A. I started drawing from A. I started drawing from here, round, 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 and reached back at the same point A. It means I'm talking about the boundary. I'm talking about boundary of the circle. Okay? Boundary means only I'm talking about edge, not inside, not outside. This is the outside area. This is the outside area of the circle. I am not talking about that. I'm talking about only boundary. I'm talking about only edge of the circle. Okay. And if I'm talking about inside, I'll be talking about the region or space of the circle. Now in mathematics, you have learned so many new names, right? Here also some name is given to the boundary and some name is given to the part which is inside the circle. So what is that name? Whenever we talk about boundary, its name is given it as perimeter of circle, right? And whenever we talk inside space, inside the circle, we talk about area of the circle. Please remember. These are the typical names given in mathematics. If you have to find area, then you have to think about the space inside. Whenever you have to think about perimeter, you have to talk about boundary of the shape. It could be square, it could be rectangle, triangle, it could be quadrilateral, pentagon, hexagon, it could be any figure, any closed figure, right? Any closed figure you are having, you can find the perimeter. You can find the boundary. I started from S. I started, went through this, went through this side, went through this side, went through this side, reached back at S. It means I'm talking about perimeter. If I'm talking about how much grass is to be laid inside, how much grass is to be put, right? That I'm talking about inside area. I'm not talking about boundary. Boundary is already there. I'm talking about what to put inside this space. It means I'm talking about area. Okay, I have given you introduction verbally. Okay, now I'll be asking you in general. There are so many things around you. You can look around and just imagine where you will be thinking about perimeter and where you will be thinking about area. Okay, be ready for that. I'll be calling names. Okay, this is just general things
You look around your room, wherever you are sitting, right? All of you are carrying a paper, paper is in front of you, notebook is there, right? If I tell you what is the size of your sheet, what is the size of your paper where you are writing? So you will be thinking about area or perimeter. Think of it. If I'm asking you, what is the size of your paper where you are writing? If you are carrying a small notebook, who have less space, right? Arjuna has also joined. Let me admit them. Right. I can see hands. Yes. Okay. I can see many hands. Aurora section, last girl near the wall. Yes, please come forward. I'm asking what is the space on your paper? How much is the space with you to write? What you will think? Parameters. Okay. Who else? Anybody else who wants to say anything? Okay. That girl, third bench, middle row. Yes. Yes, beta. Ma'am, area. Area. We are talking about how much is the space with you to write the things. Right? Who agree? Yes, we are talking about area when we are talking about space. Raise your hand. Wonderful. Wonderful. You have understood? Right. You have also understood. The girl who is sitting there. Okay. But see, you have to just think a little whether we are talking about boundary or about the space. Right? I have a thing with me. You can see very well. I'm talking about this brown border where stars are there. Right? This is something framed on the box. What would you talk about when we are talking about this? Surrounding this picture, surrounding this picture. Yes, Iva section first boy. Yes, very good. Perimeter. Perimeter. We are talking about surrounding the space around this. Very good. Whenever we are talking about a photograph to be put inside this frame, size of the photograph. Now I go to market, I bought this frame, I want to put a photograph in this, but I have to select the photograph size. There are so many sizes of photographs, bigger, smaller. At home you must be having big photograph, small photograph, but I want of that size which should fit into this frame, right? Into this frame. So what should I talk about? Area or perimeter? Who say area? Raise your hand. Wonderful. You have understood. We are talking about the space which is inside this border. Right? Okay. You have window in your room where you are sitting. Right? In window, what all you say? You see a glass. Then you see a border around it. Maybe a wooden border or a metal border, whatever. Okay? They are of different kinds. For putting a window in a room, we talk about a glass and we talk about the border around the glass, which holds the glass. Glass को ऐसे तो नहीं लगाते ना window पे. We want some border around it to give a gripping to it, which can hold the glass. So if you're talking about how much should be the size of glass, what you'll be thinking of? That person who is putting the glass in window, what he will be thinking about? Area or perimeter? Putting window in only glass. We are talking about glass to put in a window. If window is of, see, let me clear it. If window is of this size, suppose this size, he has to select a glass, right? Who say it should be area?
Yes, yes, no doubt. Because this was the window size, he has to put glass over here. He had to measure the dimensions of the glass and put it here. But to put the glass, he has to take a border also around it of wooden or metal or something. What should he think of now surrounding this? What it should be? Surrounding the glass, some frame is required, just like a photo frame. For this frame, what should he use? Is it perimeter? Raise your hand who say for the border he requires perimeter. Very good, excellent. Hands down. I have a photo frame again. You can see the size of photo I have at home. I will require that size frame. So frame is the border which is surrounding, that is a perimeter, right? Okay. One thing more, you have understood when we are talking about a border, we are talking about the surrounding. You have come to know. Suppose I have A, B, C, D, a square window. I have to put border around it. I'm talking about perimeter. Perimeter means what? Now, what it should be? Will I be getting the whole frame from market? कि उसको फ्रेम को ऐसे लेके आएंगे स्क्वायर और स्क्वायर को स्क्वायर ऐसे लगा देंगे. Will it be like this? No. We will get the dimensions of the EB. We will get dimensions of BC. We will measure what is CD length. We will measure what is DA length. We will measure all the sides and put them one by one. Firstly, it will be put at AB, whatever may be 6 centimeter. We will cut. Okay, Arjuna section, beta, welcome. You have joined so late. Yeah, good to see you all. Happy New Year to all of you, first of all. So nice to see all of you. We have just started with area and perimeter. Hands down, beta. Hands down. Good. We just started with area and perimeter. We have not written anything. Don't worry. We are just discussing it. Right? I'll be telling you when to write. So I'm telling you to find the perimeter, we have to measure what is the length of AB. First of all, we will put here. Right? Then we will measure what is BC. Maybe it is 5 centimeter. I will connect it here. 5 centimeter. Then again I will measure. Maybe it is 6 centimeter. I will put it here. Right? And then I'll be measuring 5 centimeter DA. And then this is the border. So this will be the frame ready for the window one by one. Not all together. I have got a square from the market. I am putting it on the window. It can't be like that. I have to measure all the sides. If I'm using here wood, wooden window, wooden frame, what should I do? I'm putting one piece over here at AB. Second piece I'm putting here BC. Then I'm putting CD. Then I'm putting DA. So my frame is ready to put here. It means what should be the perimeter? It should be AB plus BC plus CD plus DA. All together, when we add them all, it becomes the perimeter of the figure, perimeter of the window. Is it clear? Arjuna section, I'm just repeating for you. I told in the beginning, whenever we have a circular part of some space, whenever we are talking about inside part, we are talking about the region or space or area. And whenever we are talking about the border starting from S and moving again around the bounding,
boundary and reaching again at S, I'm talking about the boundary. I'm talking about edge. I'm talking about surrounding. And finally, I'm talking about perimeter. Please remember, in question, you will be seeing so many things. You have seen so many things at home, putting a border around a notebook, putting a border around a gift, putting a lace around a cloth. Whenever we're talking about putting a lace around a cloth, we are talking about boundary, we are talking about perimeter. And whenever we are talking about what to put inside, how much is the carpet to be put on in the room? Carpet size. What you will be measuring? Area or perimeter to see the carpet size? Who say area? Raise your hand. Yes, you have understood. Great. Now please write down few things. Write down definition of perimeter. We will be writing examples also. Now you can start writing neatly. Write down the heading also. It is mensuration chapter I wrote in the beginning. Right? You can also write down. Whatever we'll be doing, we will be writing examples also side by side. We are talking about perimeter. Perimeter is the total distance. Total distance. Total distance means we started from S and reached again at S. Total distance along the boundary. Along the boundary. किसकी boundary? Of a closed figure. Of a closed figure. This is perimeter. Please write down. You will be using it in assertion reason. The whole statement you should know. Perimeter is the total distance along the boundary of a closed figure. Very, very important. It should be closed. Write down examples where you use the perimeter. First example is fencing of a garden. Garden is there. You have to put a fence around it by using wire or rope or whatever. Everybody understand what is fencing? All right. Second is putting lace or ribbon around a cloth. Around a cloth we are talking about surrounding the cloth. Cloth could be small, big, round, square, rectangle, whatever size. But we want around the cloth, around surrounding the cloth. Right? Running around a track. Running around a track. You must be doing on your sports day. Otherwise also, at home, when you play in the evening, you run around the park, on the footpath maybe, which is surrounding the park, right? Boundary of school.
or home. You can boundary of your house or maybe school. Whenever we are talking about boundary, it means we are talking about the perimeter. Okay, you have given me so many examples about this also from your surrounding. One more, photo frame. We are not talking about size of photo. We are talking about frame only. It could be big, it could be small. These are all examples you will be using in different questions, right? After this, I'll be telling you a few formulas, how to use. Everybody has noted till here? All right. Okay. I want to show you more examples. See this window, I told you. We were talking about one window, but here you can see there are different parts of the window. One window is there, which is plain rectangle. Then there is another window at the top, which has different border. Can you see? One border is around this, other border is from here to here, upper rectangle, and another border is at the bottom of this window. Then there is a border here also. Here also you can see different parts of this. Okay? And these are properly measured. Perimeter find out karke properly the wooden part is measured and then put it over there. It means we are talking about perimeter. Okay? Can you see this? I am the space inside. This is a puzzle, right? I am the space inside. I am not a line. To find me, you multiply and define. So many children are standing. Please sit down. Perimeter surrounds me, but I stay within. What am I? This is a puzzle. Let me call the name because so many children are standing. Arjuna section. Ganika. What it should be? Ma'am, area. Should be area. Yeah, you have understood. This is area because we are talking about the space inside. Next one is I am a shape with four equal sides, right? My perimeter is easy to decide. Measure just one. Multiply by 4. What shape am I? Why multiply by 4? Because 4 equal sides are there. Is it perimeter? So many children are raising their hands. Is it a perimeter? I can see all the hands with perimeter answer. Yes. Why are you crossing your hands, Arjuna section, that boy? Isn't it a perimeter? If you agree this is a perimeter, please raise your hand. Who say yes? I am a shape with four equal sides. My perimeter is easy to decide. Measure just one and multiply by 4. What shape am I? What it should be? What should be the shape? Arjuna section, first boy, yes. Square. Square. We are talking about a square in which all the four sides are equal. All right.
These are the figures, right? You have to write the perimeter of them. Can you find the perimeter of this first figure? Please do it. Can you see this shape? T shape. Okay, right. I'll be drawing it then. Wait. Let us write more. I'll be telling you. Let us do an example. Write down formula of perimeter, which you'll be using in questions. You know, when we talk about AE over here, it is the plural of formula. We don't write formulas. This is formula. Formula is A, and when we write E at the end, it means I'm talking about plural of formula. Okay, we are going to write about perimeter only, right? First is, let us talk about a triangle. We'll be drawing shapes. This is a triangle. You also draw it with free hand using 3 lines of your notebook at least, so that it should be clearly visible. Let me write down the sides A, B, and C. So perimeter of triangle, of triangle. Which type of triangle is this? If one side is A, other is B, third is C, they are all three are different. What type of triangle is this? Aurora section first child. Yes, first girl. Yes, come forward. Ma'am, scale. Scale in triangle. This is scale in triangle. Please write down here scale in, so that you come to know whenever it is a scale in triangle, you will be adding them together. All three are different. You should know the shape of the triangle also, right? B1, if you have a triangle like this, what is the name of triangle? Yes, second last girl in neighbor section. Yes. Perimeter of what? It's isosceles. Isosceles triangle. Isosceles. See the spellings carefully. You will be using it many times. Now in 7th onward, isosceles triangle is equal to 2a plus b. You know it is 2a plus b, right? It is 2a plus b. Why 2a? Because there are two sides which are equal. A plus a is 2a, right? We have another triangle. Use at least 3 lines to draw a figure so that you can revise it later. These are, you know its name. Everybody knows it. Don't mind if it is little small or big, right? Because you are not using scale. Draw with forehand. You know its name. It is perimeter of equilateral triangle. Equilateral triangle. It will be equal to 3a. You have done it in algebra that whenever we add all the alphabets like a plus a plus a, we get it as 3a. You have read it over there. So we are using algebra part over here in geometry. Okay? All the parts of mathematics are interrelated with each other. So in all these figures, we are talking about the boundary, we are talking about the perimeter, we are talking about the length of the sides. Please remember, we don't bother the triangle is small or big, doesn't matter. We are talking about the sides, the lengths of the
Boundary, the length of the sides of the triangle. Okay. What is inside the triangle that we don't know. We are not thinking about that. Okay. You're talking about measurement. So what should be the unit of that? Please, you have to think of that also. Write down note. Unit of perimeter. Whenever we use geometry, we always write the unit with that. It could be centimeter square, it could be meter square, it could be meter, centimeter, millimeter, kilometers, liters, milliliter. So many units are there which are used. But unit of perimeter will be what? It is the unit of length. Please remember, whatever length you are using, वही unit आपकी perimeter की आएगी. It could be centimeter, it could be meter, right? You can write in the bracket for your knowledge. It could be meter, centimeter, kilometer. It could be if it is a long distance, right? Etc. Unit of perimeter is always the unit of length. It could be bigger, it could be smaller, it could be tiniest, it could be largest, whatever, according to the figure. So we have done about these all. Let me write down the second also now. Shall I clear it? We are just continuing with the formulas only. Okay, don't worry. Your heading is still there. Write down the second part. We have a square now. You recognize it by the sides, you know, make it a habit. We are talking about if shape is not told to you, you can understand yourself by looking at the figure. What is the shape of the figure? Okay, so what should I write here? Perimeter of what? Of what is the shape? Is it square? Yes, all the sides are equal. Perimeter of square is equal to 4a. We need not write it now. A plus A plus A plus A. Okay, we need not write it in expanded form because we are expert now. We have understood. We have to add all the sides. From algebra, we know A plus A plus A plus A is 4A, right? And this is first part. Second part is, if I'm drawing another shape over here, you use 3 lines of your notebook at least. It is A, this is also A, this is B, this is B. You know the shape? Perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle. By knowledge, you know, we have to add all the sides. We have to write the total length of the figure. Total length is 2A plus 2B, that is equal to 2A plus B. In books, you see the formula of perimeter of rectangle is 2L plus B. But you should know how it has come. Why 2 is there? You should know because we have 2 lengths and 2 breadths which are equal to each other. Okay? If you don't remember the formula, you should know by knowledge that we are adding 2 lengths and then we are adding 2 breadths and then we are adding these all 4 to get twice of A plus B. Right? C part is
I'm drawing one more figure of this kind. What is the shape, the name of this shape? Yes, Aurora section. Yes, the girl who is sitting alone near the wall. Yes, come forward. Yes. What is the name of this shape? Pentagon. Pentagon. You know, pentagon, if I write here, what should be the name? If I write here A, everywhere, what should be the name then? Yes, second last girl. Aurora section, yes. If I write all the sides to be same, what should I call it? Regular pentagon. Regular pentagon. Perimeter of regular pentagon. Please remember, regular word is telling you that all the sides are same. All the sides are equal in length. It means we are adding them all and it should be 5A. 5 A's are adding. Right? I have a pentagon over here. You can see very well, all of you. This brown part you can see, and there is a black boundary around it. You can see over here around the boundary. Okay. This boundary is the perimeter of this pentagon, and this is regular pentagon. All the sides are equal. Okay. You can see 1, 2, 3, 4, and 5. All the 5 sides are there. I have drawn it over here. And this is a regular pentagon. And when you have to find the perimeter, you have to measure all the sides. 1, 2, 3, 4, 5. All the sides you have to add with the scale. And then you have to find the perimeter. Okay. So here I have taken all the sides to be equal. Please remember, in this chapter, you will be finding these signs. Whenever two sides are equal to each other, उनका sign ऐसे ही होता है. Please remember, whenever I'm putting single line, single marking is telling us that they both are equal. This double marking on both sides is telling us that they both are equal. Similarly, if this is a square, these small tiny lines on all the sides is telling me that all the sides are equal. Similarly, in pentagon, if I draw all the sides like this, by marking these small lines, it is telling us that this is regular pentagon. Here I have written A around it. You have come to know all are equal. If these are A is not written over there, but only marking is there, you should be guessing yourself that this is a regular because all are of same marking. It is telling that all the sides are equal. Okay, beta? Let us do a few questions. I'm drawing the figure over here. We'll be writing. Now, let us do examples. Next time we'll be doing from module. First example is, I'm drawing the figure here. Let us do it. I have a rectangle. You can draw it with free hand. Doesn't matter if it is little tilted, no problem. Your measurement should be all right. It is 40 centimeter. It is 10 centimeter. And this is 40 centimeter. And this is 10 centimeter. Please see the unit also. Okay. You have to find perimeter of the figure. I'm not telling this is a square or rectangle or what. I'm telling you write down the perimeter of the figure. You have to guess yourself that if opposite sides are equal, you can apply the formula of rectangle.
If by chance you don't see that all the sides are equal, you just add them. Write down AB plus AD plus DC plus CB. Write in order. These are good manners. I have seen many children, sometimes they talk about AD, sometimes BC, sometimes AB, DC, zigzag करके सारी values जो है उनकी लिख देते हैं. You will only get confused if you write this side and not writing in continuous way. Please take in order from wherever you are starting. You are starting from DC, go anti-clockwise. If you are talking about AD, go clockwise. Okay, एक ही direction में जाओ जहां भी जा रहे हो आप. Write down all the names properly in that. Now it is clear, and few children must be writing it as 2L plus B. I know, because you have guessed very well. This figure is none other than rectangle, because opposite sides are equal. So you can write it as 40 plus 10, which is equal to 100 centimeter. Don't forget to write the unit. Without that, it has no meaning. Writing of unit is very, very important. Don't write only the number. Second example, I'm writing here. You can note down the question. These are all important. Shweta takes 10 rounds. Takes 10 rounds. You can talk about, you can think about it. We are talking about the boundary. Shweta takes 10 rounds of a rectangular park. Figure is not given to you. Rectangular of a shape is given to you. Rectangular park, right? 50 meter long and 25 centimeter, 50 meter long and 25 meter wide. Right? Please remember, in mensuration chapter, whenever you do any question, please draw the diagram first. With free hand, scale is not required. There are lines in your notebooks. You can draw yourself. Whatever shape is given to you, you draw it. Use at least 3 lines of your notebook to make it neat diagram, right? They have said 50 meter long. Of course, it will come here. And of course, the opposite side will be equal because we are talking about rectangle. You know it. Lengths are equal to each other and breadths are also equal to each other. So we have to write our own dimensions according to the given dimensions in the question. We have drawn our own diagram. These are good manners to do a question. Okay. Only solving of the question is not important. Presentation of the question is also very, very important. How you are presenting it to the teacher. It matters a lot. Because you're growing big, that's why I'm telling you, you have to learn few things, how to express yourself in writing or speaking, whatever. Okay, so we have to find, question is yet to be written. Find the total distance. Find the total distance covered by her. Figure was not given to you. I have drawn it for you to tell you that without figure you will not be solving. I'm reading the question once again. Shweta takes 10 rounds. Most important point is told in the question, 10 rounds.
Then important thing is given. What is the length? What is the width? Which you are choosing in figure. Okay. Now you are finding the total distance traveled by her. Everybody think of it. Table section. Aniket, can you tell me how to go? Don't tell me the answer. I'm not asking you calculation. I'm just asking how will you start? How will you, what is the formula and how will you be expressing your answer? Ma'am, long and wide. Ma'am, length multiply breadth. Ma'am, multiply the rounds. Ma'am, that are worked by her. Why multiply? Ma'am, because ma'am, sorry. Ma'am, 15. Starting from here, Shweta is Ma'am, starting yes. from this point and running around the park, running around the boundary. What you will use using it? Ma'am, 2 multiply by length plus breadth. Ma'am, by mistake I see. Okay. She is running around. That's why we'll be talking about perimeter. Okay, sit down, Beta. Okay, okay, please wait here. I want to ask you, after calculating 2L plus B, you told me. What would you do? Will it be the final answer? Ma'am, final answer will be 1.5 kilometers. That is okay. Whatever answer you find after doing 2L plus B, what would you do? Ma'am, multiply by 10. Multiply by 10. I want you to hear that because she is taking 10 rounds. You know, whatever you're finding by 2L plus B, you're getting answer of one round. Because perimeter is telling me one round around the figure. One round. Please remember. Okay. If she is taking 5 rounds, we will multiply it by 5. If she is taking 7 rounds, then multiply by 7. If 10 rounds, multiply by 7 and go ahead. Anybody has found? Final answer? Total distance, have you found? Anybody? Yes, Arora section, last boy. Have you found beta near the window? Okay, you can come. Who is raising his hand? Yes, third bench from the last. Yes. Can you tell me what is the total distance? Ma'am, 1500 meter. 1500 meter is the coming. This is final answer. It is 1500 meter. Who are getting 1500 meter? Please raise your hand. All right. Don't forget to multiply by 10. This is a big mistake done by many children because the moment they read this question, they know they can do it. Okay, they write the formula, they calculate, but they forget to do multiplication because they have not read the question once more. Please read the question twice to know whether you have found the correct answer or not. What had been asked to you. Please remember. Okay, and these questions are not difficult at all. Once you know the formula, once you know what should be the unit. Unit can be marks katte. If you're not writing unit or wrong unit, if you're writing instead of meter, you are writing centimeter, the marks will be cut. Please remember. Okay, do it cautiously. So next time we'll be doing more questions, beta. All the best. Please revise it. Okay, beta. Okay, just a minute. I want to do one more question of perimeter. Sorry, perimeter we have done. I want to do of area. Please remember. You know, one child told me we have to multiply L into B. So let me do that question also. What is L plus L into B? Write down formula of area. That about area also. First figure is square.
If we are talking about a square which has all the sides equal, you have to write it as side into side. You know this formula, side into side. It means A into A. That is A square. Whenever we write 2 at the top, it means we are multiplying this number by 2 times. Please remember. This is new thing for you. Whatever number we write at the top corner on the right side, A square we call it. It means we are multiplying that particular number 2 times. Okay, I'm writing it for your knowledge. But you must know that in area we multiply the sides. That is S into S. Sometimes you write A into A, whatever side is given to you, right? And in rectangle, if we have a rectangle is there, you are writing it as this, A and B. Of course, this is a rectangle. If I don't write the name, then also you know by the shape, by the dimensions. So it will be A into B. That is length into breadth. Okay, length into breadth, whatever it is. Don't look for where is A, where is B. Don't look for that. You look for what is length and what is breadth. Okay, beta? Please revise these all. Next time we'll be doing more questions. See you next time. Hello, good afternoon, students. So आपका बेटा बताना लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर हो चुका है क्लास में? इट इज डन? नो, चल रहा है? इट्स गोइंग ऑन? स्टार्टेड? मैम यस, ओके 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 बेटा. Ma'am, we have started but not completed yet. Good morning, students. Good morning. Shabash, bete. So we have 3 sections. Arjuna और Abel. Well, bete, हमारा जो यूनिट बनेगा उसका नाम है, आपको पता ही है, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शंस. राइट डाउन एवरीबॉडी. लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन. शाबाश एवरीबॉडी बेटे. प्लीज सेटल डाउन. अर्जुना स्टूडेंट्स, बेटे किसी भी चैप्टर का अगर हमें नॉलेज हो जाता है, योर अटेंशन, अगर हमें किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज हो जाता है तो भी कई बार हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते. यू नो व्हाई?
क्योंकि बच्चे के पास क्वेश्चन का आंसर तो होता है, लेकिन आंसर को लिखने के लिए रिक्वायर्ड वोकेबलरी नहीं होता उसके पास। पर्टिकुलर वर्ड्स जो उस चैप्टर के आंसर लिखने के लिए चाहिए होते हैं, वो टर्मिनोलॉजी नहीं होता। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से लिंक्ड जितने भी साइंटिफिक वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। शाबाश, मैं लिस्ट बना रहा हूं, आप साथ के साथ लिखोगे और उसको मुंह से बोल के देखोगे, स्पेलिंग्स भी साथ के साथ याद करोगे। शाबाश एवरीबॉडी, वी आर गोइंग टू राइट द लिस्ट ऑफ व्हाट बेटे, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ऑफ साइंटिफिक वर्ड्स। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आप आंसर लिख ही नहीं पाओगे। तो कौन कौन से साइंटिफिक वर्ड्स हैं? इंसिडेंस, नॉर्मल, मैग्नीफाइड, कन्वर्ज, डाइवर्ज, कैमरा। शाबाश, every students please keep on writing these words. Shadow, projection, translucent, transparent, optics, fake। शाबाश, कोई छूट ना जाए बेटे, सभी के स्पेलिंग आपको याद होने चाहिए। वेलोसिटी, स्पीड, लाइट, रिफ्लेक्शन, बीम, टॉर्च, मिरर। शाबाश, प्रोपेगेशन, नेचुरल, मैन मेड, रेक्टिलिनियर, रे ऑफ लाइट। शाबाश, keep on writing। मटीरियल, प्रोसीजर, स्लैब, लेंस, प्रिज्म, रेनबो, विबग्योर, इमेज, ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन,
और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इतने वर्ड्स के आपको स्पेलिंग्स आते होंगे और आपको इनका मीनिंग क्लियर होता होगा, तभी आप पेपर में आंसर लिख पाओगे। शाबाश। इनका जो मीनिंग है वो चलते लेक्चर में अपने आप क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इनके स्पेलिंग से सभी बच्चे कल को याद करके आएंगे। आई विल आस्क यू, हैव यू रिटन बेटे? हरी अप, ताकि मैं आर्टिकल का नाम लूं। एक और भी लिख लो, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। देखो पूरा बोर्ड भर गया बच्चे। अब देखो ध्यान से, टीचर इनका इंग्लिश मीनिंग बताने लगे हैं आपको थोड़ा थोड़ा, साथ के साथ शुरू में ही बता दूंगा थोड़ा सा इंग्लिश, इंग्लिश का मीनिंग, फिर आर्टिकल वाइज लेंगे। ओके, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपने उन मीनिंग्स को लिखना नहीं है, आपने सिर्फ ध्यान से सुनना है। लिसन, इंसिडेंस का मतलब होता है ऐसे रे ऑफ लाइट की, फॉल ऑफ द रे ऑफ लाइट। इंसिडेंस का मतलब फॉल ऑफ रे ऑफ लाइट। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है बच्चे? अगर एक लाइन वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसी को नॉर्मल बोलते हैं। एक लाइन वर्टिकल तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल, तो तब ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, और तब आपस में ये दोनों लाइनें क्या है? परपेंडिकुलर, नॉर्मल है। वर्टिकल लाइन इज नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉर्मल टू द वर्टिकल। नेक्स्ट, मैग्निफाइड, कितने गुना कोई चीज बड़ी होगी। मान लो कोई चीज का साइज इतना था और बाद में वो साइज इससे डबल हो गया, तो डबल का मतलब हो गया इसका मैग्निफिकेशन 2 हो गया, 2, क्योंकि डबल हो गया। अगर ये बड़ी वाली चीज छोटी वाली चीज से 3 टाइम्स बड़ा हो, 3 टाइम्स, तो मैग्निफाइड 3 टाइम्स मैग्निफाइड हो गया। और मैग्निफिकेशन कितना हो गया? मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 3 हो गया। राइट बेटे? कन्वर्ज का मतलब, अगर इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है और इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, वो दोनों एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्ज। फोकसिंग, फोकसिंग एक पॉइंट पे। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाव, एक रे ऑफ लाइट इधर जा रही है एक इधर। बिखराव, ये परे परे हट रही है दोनों रेज ऑफ लाइट, इसको डाइवर्ज बोलते हैं। कैमरा आपको पता ही है क्या होता है बच्चे, जिससे फोटोज खींचते हैं। शैडो किसको बोलते हैं? परछाया। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो देखो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरे हाथ का शैडो उधर पड़ेगा लाइट से, तो इसका मतलब है परछाया को इंग्लिश में शैडो बोलते हैं। और शैडो वर्ड को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में प्रोजेक्शन बोलते हैं। शैडो को ही प्रोजेक्शन बोलते हैं साइंस की टर्मिनोलॉजी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शैडो। हिंदी में क्या बोलेंगे? परछाया, परछाई भी बोल देते हैं इसको। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज जिसमें से कुछ पोर्शन लाइट का जा सके कुछ ना जा सके। देखो हमने ज्यादा लाइट फेंकी थी, थोड़ी सी आर पार हो सकी, थोड़ी सी आर पार हो सकी, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट में क्या है? अगर किसी चीज में हमने लाइट फेंकी और लगभग सारी की सारी पास हो जाए, सारी की सारी पास हो जाए लगभग, तो उसको, उस मटेरियल को ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ऑप्टिक्स क्या होता है बेटे? ऑप्टिक्स का मतलब ऐसे चैप्टर की नॉलेज जिसमें हम लाइट, मिरर, ह्यूमन आई, कैमरा, ये सारी चीजों की स्टडी करते हैं। साइंस की उस ब्रांच को ऑप्टिक्स बोलते हैं। ओपेक क्या होता है बेटे? जिसके आर पार ना देखा जा सके, जिसके आर पार लाइट ना जाती हो। जैसे कि कार्डबोर्ड, गत्ता होता है, अगर मैं गत्ते के ऊपर इधर से लाइट फेंकूंगा तो क्या लाइट उधर जाएगी? नहीं जाएगी। तो कार्डबोर्ड को
वुड को, प्लास्टिक को, ब्लैक कलर के प्लास्टिक को हम बोलेंगे ओपेक मटेरियल। ओके, वेलोसिटी या स्पीड दोनों का मतलब होता है कोई चीज कितनी तेज चल रही है, कोई चीज कितनी तेज चल रही है, बस फर्क सिर्फ इसमें है। वेलोसिटी में चीज स्ट्रेट लाइन लेनी है हमने, स्ट्रेट लाइन, और स्पीड में टेढ़ी मेढ़ी भी जा सकती है। ओके, ये फर्क होता है। लाइट तो आपको समझते ही हो, लाइट के बिना हम देख ही नहीं सकते। रिफ्लेक्शन, अगर लाइट की रे एक चीज से टकरा के ऊपर को चली जाए, देखो यहां से टकराई और ऊपर चलेगी, इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके बेटे, और बताएं, अगर कोई बच्चा बोले सर बीम क्या होता है, तो मैं कहूंगा उसको काफी सारी रेज ऑफ लाइट, काफी सारी रेज ऑफ लाइट इकट्ठी होकर जब निकलती हैं तो उसको बीम बोलते हैं। जैसे टॉर्च को ऑन करते हैं, टॉर्च को ऑन करते हैं, काफी मोटी लाइट निकलती है एक पर्टिकुलर लाइन में, उसको बीम बोलेंगे। बीम इज ए ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। टॉर्च क्या होता है, जो लाइट को फेंकने वाला यंत्र होता है जिसमें से बीम ऑफ लाइट निकलेगी। इलेक्ट्रिक टॉर्च, बटन ऑन करा तो ऑन होगी, ऑफ करा तो ऑफ होगी, सिलेंड्रिकल शेप में होती है यूजुअली। मिरर आपको पता ही है बेटे, आप घरों में देखते हो वो प्लेन मिरर होता है, जो ड्रेसिंग टेबल होता है आपका वो प्लेन मिरर होता है। प्रोपेगेशन का मतलब होता है एडवांसमेंट, आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड। प्रोपेगेशन का मतलब होता है एडवांसिंग फॉरवर्ड। नेचुरल का मतलब होता है जो कुदरत से हमें डायरेक्ट मिले, जिसको हम ना बनाए। जैसे कि ग्रेनाइट का पत्थर, ग्रेनाइट का पत्थर चट्टानों को काट के बनता है, और चट्टाने भगवान खुद बनाते हैं, हम नहीं बनाते, तो वो नेचुरल चीज है। मैन मेड क्या हो गया, जो हम बनाते हैं। जैसे बहुत इंडस्ट्रीज के अंदर हम केमिकल बनाते हैं, कलर बनाते हैं, दीवारों पे होने वाले पेंट बनाते हैं। पेंट हमें कुदरत से नहीं मिलता, हमें खुद उसमें मिक्स कर करके काफी सारी चीजें, तब पेंट बनता है। ऐसी चीजों को मैन मेड बोलते हैं। ठीक है, जो मैन मेड चीजें होती हैं उनके लिए एक और वर्ड लगता है सिंथेटिक, ये भी लिख लेना चाहिए, सिंथेटिक, SYNTHETIC। अच्छा बेटे, एक वर्ड है रेक्टिलिनियर। शाबाश, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ। कभी भी कोई चीज जाएगी तो सीधी ही जाए रही, जाती रहे, मुड़े ना, मुड़े ना। रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये इस वर्ड का मीनिंग होता है। रे ऑफ लाइट आपको पता ही है, एक बिल्कुल धारा के रूप में लाइट आती है, और रे ऑफ लाइट कभी भी बेंड नहीं होती है अपने आप, इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मटेरियल का मतलब कोई भी चीज, मैटर, पदार्थ, ऑब्जेक्ट। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है बेटे, मेथड, कोई काम करने का तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है उसकी, राइट। फिर आ गया अपने पास स्लैब, SLAB, स्लैब क्या होता है, जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूं, कांच का ट्रांसपेरेंट शीट, कांच के ट्रांसपेरेंट शीट का पतला सा छोटा सा टुकड़ा, इसको हम स्लैब बोलेंगे, राइट। और लेंस क्या होता है, ये लेंस होता है, कैसे होता है बेटे, सेंटर से मोटा, साइडों से पतला, ऐसा लेंस। या अपोजिट भी हो सकता है, सेंटर से पतला, साइडों से मोटा। ये भी कांच का बना होता है यूजुअली, पर किसी भी ट्रांसपेरेंट का मटेरियल बना हो सकता है, यूजुअली कांच का होता है। प्रिज्म क्या होता है, ये भी कांच का बना होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है बेटे, ट्रायंगुलर शेप का। रेनबो क्या होता है, आपको पता है बारिश के बाद आसमान में 7 कलर्स दिखते हैं आपको, वो जो 7 कलर्स का ब्यूटीफुल पैटर्न आसमान में दिखता है ना ऐसे कर्व शेप में, उसको रेनबो बोलते हैं। और रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर से सुनो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन सातों कलरों के कॉम्बिनेशन को सिंगल वर्ड से बोलते हैं विबग्योर। ठीक है। अच्छा, एक होता है इमेज। मान लो मेरे हाथ में ऐसे कोई चीज पकड़ी हुई है, उसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट के सामने मैंने मिरर रख दिया, और मिरर के अंदर जो मेरे को चीज दिख रही है वो होएगा इमेज। तो कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं सुबह सुबह ड्रेसिंग टेबल के सामने ऐसे खड़ा होता हूं तो मेरे को अपना फेस दिखता है, तो जो मेरे को फेस दिख रहा है, मैं कॉम्ब कर रहा हूं, तो जो मेरे को सामने मिरर में दिख रहा है, क्या उसको मैं इमेज बोलूंगा? यस। और मैं अपने आप को खुद को ऑब्जेक्ट बोलूंगा? यस। मैग्निफिकेशन आपको बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बेटे प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में दोनों चीजें आ जाएंगी, गुण और अवगुण। गुण और अवगुण दोनों चीजें, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोर्स का क्या मतलब होता है? जहां से सोर्स ऑफ लाइट मतलब जहां से लाइट पैदा होगी। बल्ब हो सकता है, और ट्यूब हो सकती है, टॉर्च हो सकती है, ठीक है, एलईडी बल्ब हो सकता है, जहां से भी लाइट पैदा होगी। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को टर्मिनोलॉजी का मोटा मोटा मीनिंग समझ आ गया होगा, ब्रॉडर सेंस में। यस और नो? इफ यस प्लीज रेज योर राइट हैंड। इफ यस, हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा पता लग गया, गुड जॉब गुड जॉब। अब हम आर्टिकल वाइज इसको लेके चलते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू करना हो साइंस का, हमेशा इसी तरीके से शुरू करना चाहिए, जब तक कि आप 10th क्लास तक नहीं पहुंच पाते। 10th के बाद आप बिना टर्मिनोलॉजी के भी डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम एक आर्टिकल लेने लगे हैं, सभी बच्चे लिखेंगे, शाबाश। लाइट। ध्यान से सुनो, हमें पूछेगा, बोले बेटे लाइट क्या है? ध्यान से सुना, अगर इस पर्टिकुलर इंसान को ये सामने पड़ा हुआ टेबल दिखाई दे रहा है, सामने पड़ा हुआ टेबल दिखाई दे रहा है, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? इसके लिए इस पर्टिकुलर पर्सन को बताना पड़ेगा देयर आर 3 रीजंस जिसकी वजह से मेरे को ये टेबल दिखाई दे रहा है। हम कहेंगे कौन से रीजन? पहले तो वो बोलेगा इस बल्ब से लाइट इधर पड़ रहा है और वो लाइट टकरा के मेरी आईज में आ रहा है, यानी कि पहले नंबर पे लाइट का होना जरूरी है। दूसरा, अगर ये इंसान अंधा होता तो क्या उसको लाइट टेबल दिखता अगर ब्लाइंड होता? नो। इसका मतलब है इंसान के पास हेल्दी ह्यूमन आई होना चाहिए, हेल्दी ह्यूमन आई, उसकी नजर बिल्कुल सही होनी चाहिए। वो एक चीज ये होगी लाइट, और दूसरी ये होगी। तीसरी चीज, ये टेबल तब भी दिखाई ना देता अगर ये टेबल होता ही ना, यहां पर टेबल पड़ा ही ना होता। इसका मतलब वो चीज भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं। टेबल, चेयर, पेन, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है विजन के लिए, विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है? फॉर विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप बच्चे कहोगे देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, जिसको टीचर ने पहले 3 रीजन दे दिए थे। 3 रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी? लाइट, दूसरा हेल्दी ह्यूमन आई, तीसरा ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ये 3 चीजें होनी चाहिए बेटे। तो इसका मतलब लाइट क्या है? तो आप कहोगे, ओके, तो आप कहोगे फॉर द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स एंड वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज नोन एज लाइट। तो हम छोटे बच्चे हैं, भूल भी सकते हैं। लेट मी डिक्टेट इट, लिखो, शाबाश एवरीबॉडी, शाबाश एवरीबॉडी। लाइट, व्हाट इज लाइट? क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट लिखोगे? लाइट इज one of the 3 requirements. Light is one of the 3 requirements to view an object. One of the 3 requirements one of the 3 requirements में होता है जरूरतें। One of the 3 requirements to view an object। और क्या करता है लाइट? इसी की डेफिनेशन में ही आएगा, ये भी डेफिनेशन में वर्ड आएगा और ये भी डेफिनेशन में आएगा। लाइट, शाबाश,
causes are sense of vision activated सेंस ऑफ विजन एक्टिवेटेड। इंसान के पास कितनी तरह की सेंसेस होती हैं? 5 सेंसेस। टच की होती है, टेस्ट की होती है, हियरिंग की होती है बेटे, इसी तरह से विजन की भी होती है। ओके, शाबाश। 5 सेंसेस में से वन ऑफ दी सेंसेस, कौन सी सेंस? सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन एक्टिवेट हो जाती है लाइट की प्रेजेंस की वजह से। ओके, ये है हमारा लाइट के बारे में छोटी सी बात। अब दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट करो, क्रिएट करने लगा हूं बेटे आपके लिए। नेक्स्ट क्रिएट कर क्या करेंगे हम? लाइट सोर्सेस। लाइट सोर्सेस, कोई बच्चा मेरी मदद कर सकता है? लाइट सोर्स का क्या नाम हो सकता है? शाबाश, एनीबॉडी इन द क्लास तो मेरे को लाइट सोर्स की एग्जांपल दे सकता है? शाबाश बेटे। हाँ हाँ, यहीं से बोल दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, डोंट रेज योर हैंड, इतने जोर से बोलो कि आपका कैमरे में आवाज आ जाए, बैठे बैठे। हाँ कोई बात नहीं। तो एक बच्चे ने बोला बल्ब। बल्ब को हम लैंप भी बोल सकते हैं। शाबाश, ट्यूबलाइट। ठीक है, एलईडी बल्ब। देखिए कौन सा बच्चा? टॉर्च। पहले वाला बल्ब था उसको क्या बोलते हैं? जो पुराने टाइप का येलो कलर का होता था, ऐसे फिलामेंट वाला, इसका क्या नाम होता था बेटे? इनकैंडिसेंट बल्ब। इनकैंडिसेंट बल्ब। देखिए कौन सा बच्चा बताता है क्लास में एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत से बच्चों ने बताया सर इसका मीनिंग होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। इसी तरह से फ्लोरिसेंट ट्यूब भी होती है बच्चे। फ्लोरिसेंट ट्यूब, जिसको हम घरों में ट्यूबलाइट बोल देते हैं सिंपली। ओके, और भी बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लाइट हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं? देखो हीटर से भी तो लाइट निकलती है, और जो भट्ठी होती है, भट्ठी, फर्नेस, उससे भी तो लाइट निकलती है। एक प्यारे से बच्चे ने बोला था सर टॉर्च से भी तो निकलती है। बहुत सारी चीजें हैं। एक आपको बेटे एक और होता है लाइट बॉम्ब, जिसको आप जुगनू बोलते हो, ग्लोइंग बॉम्ब, उससे भी ओके। समुद्र के अंदर कुछ फिशेस होती हैं, उनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, वहां से भी लाइट निकलती है। ओके, तो किसी बच्चे ने अभी तक देखो सन का नाम ही नहीं बताया। स्टार्स, ये सारे हमारे लाइट को छोड़ने वाले सोर्सेज हैं। सन इज वन ऑफ द स्टार। सन और बाकी स्टार्स में क्या फर्क है? सन हमारे धरती के नजदीक वाला स्टार होता है। ए स्टार नियरेस्ट टू अर्थ। सन भी एक स्टार ही होता है। ओके, कोई भी बच्चा मून को लाइट का सोर्स नहीं बोलेगा, मून को नहीं बोलेगा। कोई बच्चा बोलता है सर क्यों नहीं बोलेगा, मून से भी तो लाइट आती है, हम देखते हैं रात को मून में लाइट आती होती है। बेटे लेट मी टेल यू, मून अपनी लाइट से नहीं चमक। मून के, अगर ये मून है ना और यहाँ पर अर्थ से हमें चमकदार दिखाई देता है मून, कारण होता है ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सन की लाइट का रिफ्लेक्टेड पोर्शन दिखता है चमकते हुए, मून की अपनी लाइट कोई नहीं होती। इसलिए आप मून को सोर्स ऑफ लाइट में नहीं काउंट करोगे, मून को सोर्स ऑफ लाइट में नहीं काउंट करोगे।
तो इस तरह से टीचर ने आपको बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लाइट समझाए, इतने सारे सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या होगा? सोर्स, ए सोर्स ऑफ लाइट इज दैट विच जनरेट्स द रे ऑफ लाइट, वहां से रे ऑफ लाइट निकलेगी। ओके बेटे, अब हम आगे चलते हैं। शाबाश। अब हम ये देखते हैं इनमें से किसी भी चीज से निकली वाली लाइट, निकलने वाली लाइट कितना तेज जा पाती है, उसका जाने का स्पीड कितना है, गति कितना है उसका। नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश, ध्यान से सुनो। एवरीबॉडी इज राइट द हेडिंग लाइट वेलोसिटी। सिंपलिसिटी में आप स्पीड भी कह सकते हो। क्यों? लाइट का जो रे है ना, पहला बात, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट जो है ना बेटे, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज। प्रोपेगेट्स मैंने आगे बढ़ती है, प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगी। और आपको कभी कभी पूछता भी है कि लाइट की रे की ये प्रॉपर्टी, ये खूबी कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। कहां से? सोर्स से, सोर्स से स्ट्रेट लाइन में चलेगी। उसकी इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? तो सभी बच्चों को याद होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। सभी बच्चे लिखो, व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन? क्वेश्चन, व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन? शाबाश, आंसर लिखोगे सभी बच्चे, मैं डिक्टेट करा रहा हूं। आंसर, the property of ray of light, the property of the ray of light to travel in its, to travel in straight line is called rectilinear propagation. Is called rectilinear propagation. लाइट अपनी मर्जी से अपना रास्ता नहीं चेंज कर सकती। देखो, हम उस लाइट को मोड़ तो सकते हैं। जैसे देखो, ध्यान से सुनो, इधर से ऐसे रे ऑफ लाइट जा रहा था सोर्स से, मैंने यहां पर मिरर लगा दिया, मिरर, तो लाइट को इधर को मोड़ दिया। लेकिन ये लाइट अपने आप तो नहीं ना मुड़ी। अगर ये मिरर ना होता बेटे, तो आप सारे कहते सर फिर तो आपकी लाइट ऐसे ही चले जाती इधर कोई। तो लाइट अपनी मर्जी से रास्ता चेंज नहीं करती, जिधर को इसको छोड़ दो उधर ही जाती रहती है। तो एक पॉइंट लिख दो, लाइट डज नॉट बेंड और डेविएट बाय इट्स ओन। लाइट रे, लाइट रे लिख देना, डज नॉट बेंड, बेंड मैंने मुड़ना, और डेविएट एट इट्स ओन। ये तीन शब्द लगाने जरूरी हैं बाद में, एट इट्स ओन। हम अपनी मिरर वगैरह की मदद से तो मोड़ सकते हैं लाइट को। अगर मिरर ना होता तो कैसे मोड़ते? तो नहीं मोड़ सकते थे। अपनी मर्जी से लाइट नहीं मुड़ेगी, बस जिधर को छोड़ देंगे उधर को जाएगी। अब ध्यान से सुनना, स्पीड, स्पीड को स्टडी करते हैं बेटे, या वेलोसिटी को ही। वेलोसिटी का क्या बोला था टीचर ने? स्ट्रेट लाइन के लिए वेलोसिटी यूज करते हैं। स्पीड स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जिगजैग रास्ता भी हो सकता है। ओके, अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ध्यान से सुनो, स्पीड का मीनिंग समझो बच्चे। मान लो आपकी क्लास में ये बच्चा पढ़ता है, इसका नाम है ललित, और ये इसका घर है बच्चे का, होम। और ये बच्चा यहां पर पहुंचता है, ये उसके स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल। और मान लो उसके होम से स्कूल का रास्ता स्ट्रेट लाइन है। व्हाट इट, मैंने इस बच्चे से पूछा तुम्हारा स्कूल घर से कितनी दूर है?
वो बच्चा बोलता है सर मेरा स्कूल घर से 100 मीटर दूर है। मैंने कहा ओके, तुम्हें घर से स्कूल तक जाने में कितना टाइम लगता है सेकंड्स में, घड़ी के सेकंड में? तो वो बोलता है सर मेरे को ना 20 सेकंड लगते हैं। मान लो घर से स्कूल तक जाने में उस बच्चे को 100 मीटर का गैप कवर करना पड़ता है 20 सेकंड में। तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा फिर तुम्हारी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है? स्पीड भी कह सकते हैं पर वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। तब वो बच्चा बोलेगा सर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना आ गया बेटे, 100 को 20 से डिवाइड करके 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। मतलब कितना डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम के अंदर अंदर, ये स्पीड का मतलब है। शाबाश, सभी बच्चे एक फार्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू, सभी बच्चे लिख दो, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसको स्पीड बोलते हैं, इसको स्पीड बोलते हैं। शाबाश। अब आ गया सबसे खास पॉइंट जिसके लिए मैंने ये हेडिंग लिखा था। कौन सा खास पॉइंट बेटे? बच्चा मेरे से पूछेगा सर लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट स्पीड एयर के अंदर, इन एयर, हवा के अंदर जब लाइट जाती है तो कितनी स्पीड से जाती है? मतलब लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है कितने सेकंड में, कितना डिस्टेंस कवर करती है कितने सेकंड में? शाबाश, एक बच्चे का हाथ खड़ा है अर्जुना में, प्लीज स्पीक आउट। कितनी होती है बेटे? सर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। शाबाश, बैठो। इस बच्चे का मैं क्लियर करता हूं। लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर अंदर इतने मीटर। लिख लो सभी बच्चे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर? क्वेश्चन बनाओ, व्हाट इज द, चाहे वेलोसिटी लिख दो चाहे स्पीड लिख दो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? शाबाश। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे लाइट प्रोपेगेट्स इन एयर एट ए स्पीड, लाइट प्रोपेगेट्स इन एयर एट ए स्पीड इतनी, 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। अब एक बच्चा मेरे को बोलता है 6th क्लास का, सर ये मेरे को तो समझ में नहीं आया कितनी ज्यादा स्पीड होती है। तो मैं उसको सिंपलीफाई करके बताऊंगा उसका मतलब क्या है। ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग क्या है बेटे? अभी अभी टीचर ने लाइट की वेलोसिटी या स्पीड कितनी बताई? 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। लेकिन कहां पर, पानी में या किसी और मीडियम में? नो सर, इन एयर। एयर में भी इतनी होती है, इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी इतनी होती है। कोई बच्चा बोलता है सर वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है टोटली एम्प्टी स्पेस, जहां हवा भी ना हो। वैक्यूम का एक नाम और भी होता है, याद रखना है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, वैक्यूम इज आल्सो नोन एज फ्री स्पेस। नोट करते रहा करो बेटे, ये पॉइंट्स आपको बाद में भूल जाने हैं। ओके, अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। 3 × 10⁸ का मीनिंग क्या है बेटे? ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग है 3 लगाकर, देखो 10 के ऊपर पावर कितना है? 8। इसका मतलब है 3 के साथ इस चीज को मल्टीप्लाई कर दो जिसमें 8 जीरो लगे हों। 1 2 3 4 5, इतने मीटर पर सेकंड। और इसको आगे सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसको सिंपल मैथ की लैंग्वेज में स्टडी करें, मैथ की लैंग्वेज में आपको पता है ना, जैसे यूनिटिंग मेथड होता है, 10th प्लेस 100th प्लेस, ऐसे आपने सुना होगा। बताओ कितना बना, कोई बच्चा बता सकता है कितने करोड़ बना ये, या कितने लाख? हाँ जी बताओ। एबल में फर्स्ट बेंच पे, सेंट्रल बेंच पे एबल पे बच्चा बैठा, आप बताओ। सर 30 करोड़। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप लिख दो 30 करोड़ मीटर इन
1 सेकेंड, 30 करोड़ मीटर इन 1 सेकेंड, इतने करोड़ मीटर। कोई बच्चा मेरे को बोलता है सर मेरे को तो यही नहीं पता 1 मीटर कितना होता है। एक बच्चा मेरे से पूछता है सर मेरे को तो यही नहीं पता कि 1 मीटर कितना होता है। लेट मी टेल यू, ये आपने कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा है, और इसके साथ अगर मैं ये छोटा सा डिब्बा साथ में जोड़ दूं, ये वाला, ये दोनों की जो मिलाकर लंबाई बन गई ना, ये देखो आपको लंबाई बन गया ना, ये हाफ मीटर हुआ, हाफ मीटर से थोड़ा ज्यादा हो गया। लेट मी टेल यू असली में 1 मीटर कितना होता है। इतना होता है बेटे, लगभग 1 मीटर। इतना 1 मीटर होता है जितनी ये लाइन दिख रही है आपको, उसको फिर 30 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो। इतने करोड़ मीटर, घड़ी का सिर्फ 1 सेकंड टक। आपको पता है ना घड़ी के सेकंड कैसे चेंज होते हैं फटाफट, सिर्फ 1 सेकंड में इतने करोड़ मीटर। इतनी फास्ट जाती है लाइट, इतनी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। लाइट से तेज कोई चीज देखी नहीं गई आज तक, इससे ज्यादा तेज चलती। ओके, लिख दो, नीचे लिख दो, नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। ठीक है बेटे। आपने देखा आसमान में कभी कभी क्लाउड्स में बिजली कड़कती है, तो एक बच्चा कुछ पूछना चाहता है अर्जुना में, बेटे यू हैव रेज्ड योर हैंड, डू यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज कम ऑन द माइक, प्लीज कम ऑन द माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, आई एम सर नॉट। हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे लिखा है 30 करोड़ मीटर इन 1 सेकेंड। सर फिर जो हम सुनते थे 3 लाख किलोमीटर और 300,000 किलो, वो 300,000 वो क्या है? वो भी बताते हैं, बैठो। किलोमीटर। बेटे आप किलोमीटर बोलने लग गए आप। आपको पता है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1000। अगर मैं इन 3 जीरोस को हटा दूंगा, 3 जीरो को कम कर सर वो तो दूंगा, गलती से बोला गया था, यूनिट नहीं मुझे पता वो किस चीज के लिए हाँ होता फिर तभी गड़बड़ हो गया बच्चे। तो अगर इन 3 जीरो को हटा दूंगा तो फिर किलोमीटर बन जाएगा। फिर 1 2 3 कितने जीरो रह गए? 5 रह गए, 4 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो कितना बन गया? लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, वो अर्जुना में भी एक बच्चे ने फर्स्ट बेंच पे बोला था ये वाला। 3 लाख, बेटे यूनिट साथ में बोलना है फिर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? ओके, सर 30 करोड़ मीटर जो 1 सेकंड में करता है और 3 लाख किलोमीटर पर वो भी 1 सेकंड में, है। पर सेकंड। देखो 3 जीरो हटा दी ना, क्यों हटा दी? क्योंकि मेरे बच्चों को पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर मैं 3 जीरो हटाऊंगा तभी मैं इस मीटर यूनिट को किलोमीटर में लिख सकता हूं। गॉट इट? समझ आ गया बेटे? अब अगर 3 लाख बोलना है बेटे, अगर 3 लाख बोलना है तो आपको यूनिट क्या बोलना है? किलोमीटर पर सेकंड। अगर 30 करोड़ बोलना है तो यूनिट क्या बोलना है? मीटर पर सेकंड। और अगर कुछ भी याद ना रहे कौन सी क्या यूनिट थी, तो फिर ये लिख दो बस, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई बच्चे बोले सर अगर पानी में लाइट जाएगी तो क्या सेम वेलोसिटी रहेगी? नो, पानी में कम हो जाएगी। लाइट का वेलोसिटी वाटर में इज लेसर देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मेरे को तो वो पता है कितनी होती है, पर मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। फिर अननेसेसरी आप दोनों वैल्यूज को मिक्स कर दोगे पेपर में। बस पानी की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी पानी में कम हो जाती है। कोई बच्चा बोले सर कांच में लाइट की वेलोसिटी और भी कम हो जाती है। अगर कोई बच्चा बोले सर लाइट की वेलोसिटी ग्लास में, तो वो पानी से भी कम हो जाती है। मेरे को तो सारी वेलोसिटीज पता है पर मैं बताना नहीं है आपको,
क्योंकि अगर मैंने इन वैल्यूज को भी बता दिया तो एग्जाम में आपके सिलेबस में यूजुअली यही पूछी जाएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटे। मैं सिलेबस के हिसाब से बात करूंगा। शाबाश, समझदार बच्चे ने इसको याद कर लिया होगा। अब देखिए, हमने एक ये पढ़ा था, देखिए उससे पहले ये पढ़ा था, उससे पहले हमने ये पढ़ा था, उससे पहले ये पढ़ा था, उससे भी पहले हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, वो मैंने स्टोर नहीं करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाबाश। अब टीचर अपने बच्चों को क्या बताने लगा है? टीचर से एक बच्चे ने पूछा कि सर आपके पास क्या गारंटी है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है? मैं नहीं मानता इसको। बच्चा मेरे को बोलता मैं नहीं मानता सर, आप मेरे को बताओ, प्रूफ करके बताओ। तो टीचर उस बच्चे को साइंस की लेबोरेटरी में ले जाएंगे, वहां पर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, एक्टिविटी करेंगे। कैसी एक्टिविटी करेंगे? लिखो हेडिंग। शाबाश। एक्टिविटी टू प्रूव रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट। लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ये बताओ। ध्यान से सुनो, टीचर क्या बोलेगा जाकर लेबोरेटरी में। मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बोलूंगा, शाबाश ध्यान से सुनो, लेबोरेटरी के अंदर के सारे बच्चे 3 कार्डबोर्ड काट लो बराबर के साइज के। सभी बच्चों ने काट लिए बराबर के साइज के 3 कार्डबोर्ड। ओके, फिर मैं बोलूंगा उन बच्चों को उन कार्डबोर्ड्स के ऊपर डायगोनल्स ड्रा करो। सभी बच्चों ने डायगोनल्स ड्रा कर दिए। फिर जब उन्होंने डायगोनल्स पेंसिल से ड्रा कर दिए, तब मैं उनको बोलूंगा सभी बच्चे जहां पर ये डायगोनल कट कर रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां पर बराबर के साइज का होल बना दो। होल बनाओ, होल। बराबर के साइज के क्या बना लिए? होल। होल बना दिए बेटे। इसमें बना दिए कार्डबोर्ड में। और बनाया कहां पर? जहां पर व्हाइट कलर के दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करे, जहां दोनों आपस में कट करते हैं डायगोनल। ये व्हाइट वालों को क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में? डायगोनल्स। उसके बाद में क्या बोलूंगा बच्चों को? उसके बाद में बोलूंगा इन सभी कार्डबोर्ड के नीचे बराबर के साइज के स्टैंड लगा दो। बराबर के साइड के वुडन स्टैंड लगा दो, या गत्ते के ही लगा दो, चलो। फिर क्या बोलूंगा मैं उनको? फिर मैं उनको बोलूंगा बच्चों को, आप सारे एक कैंडल ले लो और उस कैंडल को आप ग्लो कर दो। सभी बच्चे ने उस कैंडल को लिया और उसको एनलाइटन कर दिया, फ्लेम आ गया उसमें। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा? मैं उन बच्चों को बोलूंगा कि आप जाकर इन तीनों कार्डबोर्ड्स को एक टेबल के ऊपर खड़े कर दो, स्ट्रेट लाइन में एक टेबल के ऊपर खड़े कर दो। 1 कार्ड पैरेलल टू द अदर, पैरेलल टू द अदर। एक बच्चा कहता है सर पैरेलल का क्या मतलब? ध्यान से सुनो, पैरेलल का मीनिंग समझाता हूं। अगर मेरे पास ये 2 कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है बेटे, ठीक है। अगर मैंने ऐसे रखे हुए हैं ना, जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, जिस पोज में अभी आपको ये कागज दिख रहे हैं, ये पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं किसी एक गत्ते को भी टेढ़ा कर दूंगा ऐसे, या ऐसे कर दूं, तो ये नॉन पैरेलल हो गए। बिल्कुल एक की सीध में एक, इसको पैरेलल बोलेंगे। देखो ये पैरेलल है इसको। ओके, तो मैंने तीनों गत्तों को पैरेलल खड़ा कर दिया। कहां पर खड़ा कर दिया बेटे? टेबल पे। और आपको पता है यहां पर इसके होल हो रखे हैं। अब मैं क्या करूंगा? इसके यहां पर कैंडल खड़ा कर दूंगा। कैंडल का साइज इस हिसाब से लूंगा
कि उसका जो फ्लेम है वो होल के सामने आएगा। आप सभी को पता है कि होल में से लाइट निकलेगी और फिर ये निकलेगी, और यहां पर इस इंसान की आंख में फ्लेम तभी दिखाई देगा अगर ये तीनों गद्दे एक ही सीध में हैं। अगर आपने एक भी कार्डबोर्ड को इधर या इधर स्लिप करा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तब इस बंदे को यह कैंडल का फ्लेम दिखना बंद हो जाएगा। क्यों दिखना बंद हो जाएगा? क्योंकि लाइट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता एक गत्ते से स्ट्रेट लाइन आई, फिर उसने देखा होल तो इधर है, दूसरे गत्ते का उधर को मुड़ गई, फिर दूसरे होल से जाके फिर से होल में से निकल गई तीसरे। ऐसा नहीं, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। अगर मैं एक कार्डबोर्ड को इधर को खिसका दूंगा तो लाइट को सीधी रेखा में रास्ता मिलेगा ही नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगा उसका रास्ता सेकंड वाले गत्ते से, और इस इंसान को दिखना बंद हो जाएगा कैंडल। इस एक्टिविटी से हमें यह पता लगता है कि अगर तीनों होल एक सेम स्ट्रेट लाइन में है तभी इंसान को फ्लेम दिख पा रहा है। फ्लेम क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए सेम स्ट्रेट लाइन, ये इस एक्टिविटी से प्रूव हो चुका है। किसी भी एक गत्ते को स्लिप करने से इधर उधर वो स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर कैंडल से चली हुई लाइट इंसान की आंख तक नहीं पहुंच पाती। कितने बच्चों को ये एक्टिविटी समझ आ गया? प्लीज वेव योर राइट हैंड। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डाउन। तो यहां से हमने ये सीखा एक्टिविटी से कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। अब हम एक और चीज पढ़ने लगे हैं। शाबाश। हम लाइट की नजर से, ऑप्टिक्स की नजर से मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, हाउ कैन यू क्लासिफाई दी, हाउ कैन यू क्लासिफाई दी materials optically? How can you classify the materials optically? Optically लिखना जरूरी है, मतलब लाइट की नजर से, लाइट की नजर से। ये क्लासिफिकेशन अलग तरह से होती अगर इलेक्ट्रिकली होता, ये क्लासिफिकेशन अलग तरह से होती अगर वर्ड मैग्नेटिकली होता। हम तो ऑप्टिकली स्टडी करेंगे। एक बच्चा अर्जुना क्लास में हाथ खड़ा कर रहा है फर्स्ट बेंच पे। बेटे कितने कैटेगरीज होती हैं? बताना चाहता है एक बच्चा बड़ा प्यारा सा। शाबाश। हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? हाउ मेनी क्लासेस ऑफ द मटेरियल्स आर देयर? सर 3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस बच्चे ने बोला सर 3 क्लासेस होते हैं, और दूसरे बच्चे ने मेरे को बताया कि सर हम उसका मेमोरी टूल भी याद कर सकते हैं। मेमोरी टूल, मैंने कहा कौन सा? सर ओटीटी। ओटीटी, आपको पता है आजकल टीवी के प्रोग्राम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वहां से हम मेमोरी टूल बना सकते हैं। ओटीटी, कोई बच्चा बता सकता है? ओ स्टैंड्स फॉर ओपेक, टी स्टैंड्स फॉर, शाबाश, ट्रांसपेरेंट, another T stands for translucent, translucent। अब हम देखते हैं कि ये होते क्या है बेटे। सबसे पहले ओपेक देखते हैं, ठीक है? शाबाश, लिखोगे सभी बच्चे। व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स? व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स? एक बच्चा मेरे को ये बताए कि अगर मैं एक यहां पर स्लैब लेकर आ जाऊं, शीट, स्लैब बोल सकते हो, और वो स्लैब, ध्यान से सुनना, मैंने इधर से लाइट ऑन कर दिया टॉर्च से। ये क्या है? टॉर्च। वहां से क्या निकल रही है बेटे? बीम। आपने ये बताना है कि इधर बीम आएगी, यस या नो। नहीं पहुंच पाएगी अगर ये स्लैब ग्रेनाइट की बनी हो, ग्रेनाइट की, पत्थर की। बोलो लाइट आएगी या नहीं आएगी?
बेटे यस और नो में बोलो ना। अगर यस है आपका तो ऐसे वाई बना दो, अगर नो है तो उसको उल्टा कर दो। यस या नो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका ग्रेनाइट में लाइट नहीं जा पाएगी, ठीक है। अगर ये यही वाली शीट ग्लास स्लैब आपकी सीमेंट की बनी होती तो जा पाती लाइट? यस या नो? उल्टा या सीधा? उल्टा। अगर ये वुड होती तो जा पाती? नहीं जा पाती। तो तीनों ही बार आपने उल्टा भी बोला, मतलब नहीं जा पाएगी, नो। इसका मतलब है ये सारी की सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? एनी दैट मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द पासेज ऑफ लाइट थ्रू इट। लिखो एनी दैट मटेरियल, शाबाश। मैं लिखा रहा हूं ओपेक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। एनी दैट मटेरियल, शाबाश बेटे, which does not allow passage of light through it, light through it is called an object, opaque object, is called an opaque object. अच्छा, अब मेरे को एक दूसरी बात बताओ। अगर यही वाली स्लैब मैंने किसी और मटेरियल की ली होती, लाइट को ऑन करा होता है इधर टॉर्च से, अब बताओ इधर से लाइट यस होती या नो होती? अगर ये वाली शीट, अगर ये वाली शीट कांच की बनी होती, यस या नो? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। अगर यही वाली शीट सॉलिड आइस की बनी होती, बिल्कुल आइस जो पूरी तरह से जम जाती है, फ्रिज में से निकाली हुई, ना ना बेटे, पूरी तरह से जमी होती है, व्हाइट वाला नहीं, ट्रांसपेरेंट, जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बर्फ होती है तब लाइट निकल जाती है उसमें से। यस आएगा इसमें भी। अगर एक और केमिकल होता है, उसको मैं बताता हूं, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, उसमें से लाइट निकल जाएगी? यस, निकल जाएगी। एक और होता है बेटे पेट्रोल। पेट्रोल में से लाइट निकल जाएगी? उसमें से भी निकल जाएगी। तो ऐसा मटेरियल जो लाइट की पासेज को लगभग लगभग पूरा पूरा अलाउड कर दे, लगभग लगभग पूरा पूरा अलाउड कर दे, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो डेफिनेशन लिखो क्या बनेगी? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, देखो एनी दैट मटेरियल विच डज नॉट को हटा दो बस, डज नॉट की बजाय क्या लिखोगे? एनी दैट मटेरियल विच अलाउज passage of light through it almost completely, लगभग पूरी पूरी तरह से लाइट को जाने दे, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एग्जांपल्स क्या है? पेट्रोल, ग्लिसरीन, ग्लास, आइस, पानी भी कह सकते हो अगर बिल्कुल प्योर है, वाटर। अब आ गया बच्चे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। आप में से कितने बच्चों ने एक ऐसा कांच देखा है जिसकी साइड पे खड़ा हुआ बंदा, ये तो पता लग जाता है कि कोई बंदा खड़ा है उधर, लेकिन ये नहीं पता लगता कि कौन खड़ा है, उसकी शक्ल नहीं पहचानी जाती। ऐसा कांच देखा है आपने? देखा है। ऐसे कांच को हम बोलते हैं ग्लेज्ड ग्लास। ग्लेज्ड ग्लास यानी एक ऐसा मटेरियल हुआ जिसमें से कुछ पोर्शन लाइट का निकल पाएगा, कुछ नहीं निकल पाएगा। जैसे 40% निकल जाए, 60% नहीं निकल पाएगा लाइट का। ओके, पार्शली। इसी तरह से मैं अगर ये कागज ले लूं, कागज का शीट, उसको मैं डिप करूं किसमें? पेपर को मैं डिप कर देता हूं पहले किसमें बेटे? मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। मस्टर्ड ऑयल में कागज को मैं डिप करके बाहर निकाल दूं, डिप करके आउट कर दूंगा, तो उसमें से कुछ हद तक लाइट पास करने लगती है। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं जो कुछ हद तक, जैसे आधी लाइट, 40%, 30%, 50%, कुछ लाइट पास करने देंगे, कुछ पोर्शन। लिखोगे अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज दैट
object which allows passage of light partly या partially, ये partially वर्ड अगर नहीं लिखोगे तो गलत. Translucent object is that object which allows the passage of light through it partially. एग्जाम्पल क्या होगी बेटे इसकी? ग्लेज्ड ग्लास, ग्लेज्ड ग्लास. और क्या एग्जाम्पल हो सकती है? मस्टर्ड ऑयल डिप्ड पीस ऑफ पेपर, मस्टर्ड ऑयल ड्रेंच्ड. एक बच्चा कोई और भी एग्जाम्पल देना चाहता है अर्जुना में. हाँ बेटे बोलो. सर ट्रेसिंग पेपर. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एक बच्चे ने बोला सर ट्रेस पेपर. एक्सेलेंट. ट्रेस पेपर को राइस पेपर भी बोलते हैं. सभी बच्चे लिख सकते हैं. ट्रेस पेपर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ट्रेस पेपर को हम बोल सकते हैं. क्लियर? और कोई बच्चा अगर इसके बिना कोई एग्जांपल देगा ना ट्रांसलूसेंट की, तब मेरे को मजा आएगा. और कोई बच्चा बताओ क्या हो सकती है ट्रांसलूसेंट? हाँ ये बच्चा और ऑरा में आ जाओ बेटे, फ्रंट पे आ जाओ, मिडिल सीट में से. हाँ चलो तो आप ही आ जाओ, आ जाओ. बताओ और कोई एग्जांपल ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. सर बटर पेपर. बटर पेपर वो तो चलो एक ही बात होगी मोर और लेस. नैपकिन पेपर कह रहा है बच्चा. सर बटर फ्रोस्टेड पेपर ग्लास. ठीक है, ये भी ठीक है. फ्रोस्टेड ग्लास. कौन सा? फ्रोस्टेड ग्लास. रोस्ट, हाँ फ्रोस्टेड ग्लास भी हो सकती है बेटे. फ्रोस्टेड ग्लास बिल्कुल सही. अच्छा एक बात बताओ, देखिए मैं कौन बच्चा सही बताता है कि नहीं. अगर मैं व्हाइट कलर की पतली प्लास्टिक की शीट ले लूं, व्हाइट कलर की पतली प्लास्टिक की शीट, तो क्या वो ट्रांसलूसेंट होगी या नहीं होगी? अर्जुना बताएगा. शाबाश. अर्जुना में एक बच्चे का हाथ खड़ा था. व्हाइट कलर का पतला प्लास्टिक का शीट. हाँ बताओ बेटे, एक बच्चे का हाथ खड़ा है अर्जुना में. प्लीज कम ऑन द माइक. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. देखते हैं छोटा सा प्यारा सा बच्चा यस बोलता है कि नो. सर नो. होगी, बिल्कुल सही. सभी बच्चे लिखो. थिन शीट ऑफ व्हाइट कलर्ड प्लास्टिक, वो भी ट्रांसलूसेंट रहेगी. थिन शीट ऑफ व्हाइट कलर प्लास्टिक. प्लास्टिक नहीं लिखना, व्हाइट लिखनी है साथ में, सफेद रंग का, वो भी ट्रांसलूसेंट होएगा. ओके. तो ये था बच्चे हमारा मटेरियल्स की टाइप्स. अब हमने कितने मिनट बचे हैं हमारे पास लेक्चर के? शाबाश. कितना टाइम है? व्हाट इज द टाइम लेफ्ट? मैम कितने मिनट है हमारे पास? मैं नया आर्टिकल शुरू करूं या ना करूं? कोई बच्चा माइक पर आकर बताए हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड. सर इट्स 2 o'clock. टाइम इज ऑलमोस्ट. टाइम तो ओवर हो गया बेटे. कल नेक्स्ट लेक्चर में हम शैडोज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे. जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया, वो दोनों हाथ ऐसे वेव करके दिखाओ एक बार. आज का लेक्चर, वो देखो पीछे मुड़ गए. ओ कितने 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 कितना अच्छा लग रहा है सीन. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्यारे प्यारे. थैंक यू. सबसे ज्यादा थैंक्स हमें किसका करना चाहिए? जो आपके इस वक्त क्लास टीचर्स हैं, जिन्होंने आपको डिसिप्लिन में रखा, जिनकी वजह से मेरी बताई हुई बात आपको समझ. थैंक यू टीचर्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन. मिलते हैं अगली बार. बाय बाय. थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस. वेलकम बेटे, वेलकम.